Hello, everybody. This is Shifali Baga. You're watching Sky247.net presents Not Just Cricket. And today we have with us Nile and Nikhil. Nile, good to see you. Long Lovely time to no see see, you. actually. Been too long, been too long. Yes, yes. आज मुकाबला है लखनऊ और पंजाब के बीच में। केएल राहुल जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, वो अपनी एक्स टीम के खिलाफ आज मैदान में उतरेंगे। दोनों टीम्स के बीच में आज ये पहला मुकाबला है इस सीजन का एंड दोनों की दोनों टीम्स पिछले मैच में जीत के साथ आज मैदान में उतर रही हैं। तो काफी सारी बैटल्स हैं आज इसी एक मुकाबले में और पॉइंट्स टेबल पर भी हमने नजर डाला। निखिल, आपको क्या लग रहा है आज किसका पलड़ा भारी है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक तरफ लखनऊ की अगर बात करते हैं तो शिफाली सलामी बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन मध्यक्रम पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही हैं। बीच में दीपक हुडा है, शुरुआत में रन बनाए, फिर बैट शांत हो गया। आयुष बदोनी है, तो स्टोइनिस है और होल्डर है, पर वो मुकाबले, वो कंसिस्टेंसी वो नजर नहीं आ रहे। और वहीं पंजाब के लिए भी अगर आप देखते हैं तो उनके पास वो कड़ाकेदार वो बल्लेबाजी नजर आ रही है। वो बैटिंग उनकी जो है ना, वो धुआंधार नजर आ रही है, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से लियम लिविंगस्टन भी रन बना रहे हैं, ऊपर से शिखर धवन रन बना रहे हैं, कप्तान साहब का बल्ला थोड़ा सा शांत है। बट पुणे में मैदान है, सिक्का किसके पक्ष में गिरता है ना, उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा। सो नाइल, आई थिंक I'm talking about that, maybe that whoever wins the toss, of course, in Pune would probably have an upper hand as well, because Lucknow, the openers are doing well. The middle order, really hasn't come to the party as yet. Yeah, haven't quite fired, and I don't think they really found a home for Marcus Stoinis yet. They haven't really got the best out of him. Quinton's been decent up top without really setting the world alight. But there's not much between these two sides. You would look and say, Lucknow are probably a steady side, well drilled, well led by the coach Andy Flower, well organised, where Punjab is a little bit, right, out you go, 11 players, out you go, and do your best to the opposition bowlers, take them down for as many as you can, and let's hope the bowlers do the business for Punjab. So I think if you're looking at both sides, Punjab are probably a bit more of a flair team, a bit more of an exhibitionist, like the Harlem Globetrotters of the basketball world back in the day, where you've got Lucknow, who are just a bit steady but safe, dependable, which is sometimes what you need to kind of go a long way in the tournament. But Punjab, you're always a little bit wary of, because on their night, they can be absolutely fantastic. So it's an interesting game, two kind of polar opposite sides, really. Nile, what do you think? What is the area of concern for Punjab? Well, listen, the whole mantra, it seemed right from the auction, was to get power, get a lot of power in that batting lineup. And they've got an immense amount of batting power. You look at the likes of Rajapaksa, Bairstow, Livingston. But actually, Johnny Bairstow hasn't fired yet, hasn't found any form. We're looking at one of the best batters in this tournament over the last 4 or 5 years. Hasn't clicked into gear yet. Shikhar's been excellent. So, but I think the bowling for Punjab is the area of concern. They've got a couple of quality bowlers. But I reckon their bowlers are worried if they don't bowl a team out cheap, or how many runs they can defend, etc. And the batters, on the other hand, are probably thinking, oh, I'm not backing the bowler, so I need to go I need to get 20 runs above par, as opposed to, in the middle innings of 10 overs gone, the message goes back, par's 170. In the back of your mind, if you're a batter and you're not backing your bowlers, you think we need 195. So it's a bit of an interesting one. I think Punjab, we said it from the start of the tournament. 3 weeks ago, we said they're going to have good days and bad days. They're going to be inconsistent, and it's proved that way. Nikhil, like Nile said, that they are not that consistent. So आपको क्या लग रहा है कि वो लगातार कोई 2 मैचेस नहीं जीते हैं इकट्ठे? कहाँ प्रॉब्लम है उनकी ज्यादा? उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है ना शिफाली, अगर आप उनकी बैटिंग भी देखें, सारे वो कड़ाकेदार बैट्समैन है, सब वो 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी जी बैटिंग इतनी लंबी है, हम ये कर सकते हैं। बट हर विकेट ऐसा नहीं होता कि आप पहली बॉल से सी बॉल हिट बॉल, बिकॉज शुरुआत में देयर इज समथिंग इन इट फॉर द बॉलर्स इज वेल। एंड कई बार वो विकेट, क्योंकि अगर एक ही पिच के ऊपर 2 लगातार मुकाबले होते हैं
तो वो वेयर एंड टेयर के चलते कभी कभी विकेट थोड़ी सी धीमे हो जाती है. सो एज ए बैटिंग यूनिट यू गॉट टू डिसाइड कि यार ये विकेट ना 170 वाला या 160 वाला वो बनाने जाएंगे. एक ओवर में आप 15-20 रन का ओवर आ जाता है तो आपका हमेशा प्लस हो जाता है. यू कैन गेट टू अबाउट 180 185. बट वैसा हो नहीं रहा. वो कह रहे हैं जी पहली बॉल से लेके 120वीं गेंद तक हमने सिर्फ प्रहार करने को देखना है और उसी की वजह से वो रन नहीं बना पा रहे. इफ इट वाजंट फॉर शिखर तब ये फंस गए थे. लिविंगस्टन भी पिछले मुकाबले में वो आउट हो गए थे. जॉनी बेस्टो, जितेश, उससे पहले वो शाहरुख खान भी खेल रहे थे. उससे फिर वो ओडिन स्मिथ भी खेल रहे थे. एवरीबडी वाज जस्ट ट्राइंग टू हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क. इसीलिए वो कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही जो आप कह रहे हैं ना कि एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं. लेकिन इन्होंने अच्छा काम क्या किया अपनी टीम में मजबूती लाने के लिए. एक बैट्समैन जो शुरुआत में रन बना रहा था उसको वापस टीम में लेके आया, भानुका राजपक्षे को. So he's been able to at least give some sort of consistency that Punjab needs. और वो अच्छे strike rate से रन बना रहे हैं. When he's getting runs at that healthy strike rate, it takes the pressure off from the other batsmen as well. तो वो लंबी इनिंग्स खेलने को देख सकते हैं जो शिखर का गेम रहता है हमेशा. Yes. Whereas when we talk about Lucknow, we see that KL Rahul is the one-man army for them. Do you think a form of Manish Pandey is a concern? Nile? Yeah, I definitely do. You know, he's been around quite a long time actually, and he's an accomplished batter. But you know, when you're a player and your numbers are as they are, as you can see, you know, 88 runs, and the average is obviously poor, and the strike rate is equally poor. I suppose the big plus point for him, and this will only last so long, is that the team is playing good cricket. If he was playing in a Mumbai or a Chennai when the team was playing poor, he's gone. Like, he wouldn't see another fixture. The saving grace for Manish Pandey is that the team is playing well, so it does buy you a little bit of time. How much time? Well, maybe one game, maybe two max. He needs a score, so the form definitely will be of a concern. And most notably, it'll be of a concern to him because, you know, pride in your performance. You've been around a long time. The team is looking up to you for runs, and he hasn't delivered. So definitely there is an issue there with his form. Yes, निखिल, अगर उनको ड्रॉप करें तो किसको लेकर आएंगे? मनन मोरा को ला सकते हैं, कृष्णप्पा गौतम को ला सकते हैं? जी, मुझे लगता है कृष्णप्पा गौतम से भी आप उनको मौका दे सकते हैं. वो थोड़ी बहुत वो कंसिस्टेंसी रहेगी. मनन मोरा एक बड़ा अच्छा आपने विकल्प दिया है. मुझे लगता है शायद इसी मुकाबले में वो चेंज आएगा. लाइक नायल वाज सेइंग, मे बी अनदर गेम और टू मैक्स, क्योंकि ही इज सच एन एक्सपीरियंस कैंपेनर एंड वी ऑल नो दैट ही हैज डन इट इन द पास्ट. बट अब जो है ना, वी आर इन द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि यहाँ से हर मुकाबला हार और जीत तय करेगा कि वो टॉप 4 वो क्वालिफिकेशन की रेस में आप पीछे नहीं रहना चाहते. तो मुझे लगता है आई वोंट बी सरप्राइज कि इसी मुकाबले में वो दोनों खिलाड़ी में से एक, चाहे गौतम हो चाहे वो मनन मोहरा हो, दोनों में से आज ही वो कोई एक खिलाड़ी खेल सकता है. क्योंकि आप फिर मार्कस स्टोइनिस को और जिम्मेदारी दे सकते हैं, आप दीपक हुडा को दे सकते हैं, बदोनी को दे सकते हैं. आपके पास ऐसे विकल्प हैं तो आप मजबूती ला सकते हैं. यस, ओके, थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे इस बारे में. अपनी पॉइंट्स टेबल पर हम ध्यान डाल लेते हैं एंड अब आगे बढ़ेंगे और आपको हम दिखाते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, नंबर्स ट्रैकर. दिस इज पावर्ड बाय sky247.net. चलिए, नंबर्स ट्रैकर में हम केएल राहुल के बारे में बात करते हैं. लेट्स हैव सम स्टैट्स. ओके, इनक्रेडिबल. स्ट्राइक के बारे में निकले, यहाँ पर हम बात करेंगे. स्ट्राइक रेट देखिए, 2019 135, लगभग 600 रन. उसके बाद 2020 में 670 रन, 130 का स्ट्राइक रेट. 21 में 100 लगभग 40 का स्ट्राइक रेट, 626 रन. 2022 में 2 शतक लगा चुके हैं और 368 रन, 148 का स्ट्राइक रेट. जिम्मेदारी बतौर कप्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड हर साल वो नंबर्स बेहतर होते चले गए. वेरी कंसिस्टेंट, राइट एट द टॉप, एक बैट्समैन. एंड इफ ही प्लेज दोस 30-40 डिलीवरीज, उनको पता है कि वो 60 गेंदों में 100 कैसे बनाना है. ही नेवर टेक्स 80 और डिलीवरीज टू गेट टू हिज 100. ही इज ऑलवेज देयर बिटवीन से 60 and 67, 68 deliveries to get to his 100 after he spent some time शुरुआत में in the middle as well.
So he knows how to carry the momentum even after the power play. नहीं तो बहुत सारे आप ओपनिंग बैट्समैन को देखते हैं, पावर प्ले में स्ट्राइक रेट जो होता है शिफाली अच्छा होता है, जैसी पावर प्ले खत्म होता है ना, वो स्ट्राइक रेट में गिरावट होती है, फिर जो सामने वाला बैट्समैन रहता है उसके ऊपर प्रेशर आता है. But KL Rahul is completely different. He understands how to take that responsibility and carry that forward, that momentum. Where you want to be after, say, 9 overs, then the 14th over, how you're improving the strike rate, and 5 bowlers सामने रहते हैं, तो he beautifully identifies which bowler he's going to go after. That's the hallmark of his batting. And he has done really, really well last year. When we talk about his ex-team, today he's playing against him, and as an opener, he has done his job. Do you think, Nile, is a perfect template for an opener in T20? Yeah, well, just when you saw the numbers, it's staggering really how he can play so consistently in a format that is, lends itself to inconsistency really, because especially as an opening batter, your job is to go out there and get on with it. But because he is so technically gifted and so technically sound, you very rarely see him slog a ball. You very rarely see him lose his composure and have a hack across the line. Generally very well measured, and as Nikhil quite rightly mentioned, he assesses the conditions and he assesses the opposition. So he knows, right, I'm going to take down this bowler at this stage, and he generally backs himself. So, he is one of the all-time greats in this competition. Make no doubt about it. We look at David Warner, who's been around, for a very long time in this tournament, and one of the best. KL Rahul is exactly like that. Incredible cricketer. And no surprise really that Andy Flower plumped for him pre-auction, and no surprise really that they're in the knockout stages, in pushing themselves for the knockout stages. Okay. Now we'll talk about a perfect battle today, which will happen between Rabada and KL Rahul. We have some stats, some previous stats. Let's look at this. Rabada has enjoyed some success in the past, it seems. Yes, 23 गेंदे 25 रन. He's got him out twice. Strike rate 109 का, but ये आंकड़े ना बदल जाते हैं. पुणे में जब आप खेलने को देख रहे हैं, वो पहले कुछ ओवर जरूर एक फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी इनिशियली ऑन, बट केएल राहुल आल्सो अंडरस्टैंड्स कि राइट एट द टॉप अगर आप रबाडा को नया बोल देते हो, ही इज नॉट गोइंग टू बोल मोर देन 12 डिलीवरीज एट दैट मोमेंट ऑन टॉप. ही कैलकुलेट्स कि अगर ये 12 गेंदें निकाल भी देता हो ना, एज सून एज द बॉलिंग चेंज, टू कवर दोस 12 डिलीवरीज ही कैन हिट 3 4s in the power play or 2 6s, and he covers up for letting go of Kagiso Rabada's 12 deliveries. He's not going to bowl more than 2 overs at the max, at the top, because then he'd be looking to bowl maybe the 18th, 20th or 17 and 19. So ये सब strategy, these calculations are also important, and KL Rahul does that beautifully. What do you think, Nikhil, on it? Nile, on it? Listen, I'm just thinking as an ex-batter, if a bowler's running, he's got me out twice, I'm not bothered. Two dismissals in all my cricket against him in this tournament. I don't think KL Rahul is going to be phased in any aspect. And as we've both mentioned, he reads the game and reads the situation. He knows Rabada has probably been the opposition's best bowler in the past. Even if you see him off for 7 or 8 and over, you catch up. I don't think KL Rahul is going to be overly worried about Kagiso running into him today. Okay. And Nile, if we talk about Arshdeep, what do you think? What right is he doing at the death? Amazing. Well, what a stellar campaign he's having. I looked at a few videos of the last kind of 3 or 4 days, and he's changed his technique a little bit, just where the release position is at the death. So he has changed a little bit. The economy rate. You talk about wickets, okay, you're not getting wickets, but to go at less than a run a ball. It's as good as taking 2 or 3 wickets really. Remarkable. He's getting his Yorkers in. He bowls, he's slippery. I'll call him slippery. I'll call him lively in terms of pace, and he's got the angle. So he's slid his Yorkers in well. He's just been a revelation really. Nice to see. But I did notice a little. There was somebody on the TV recently. He just has a little bit of a different release position at the back end of an innings as opposed to last season or two. So I'm sure it's something he's been working on in the off season. It's only minor. It's like maybe a 2 or 3 inches, but it might just be helping him get the Yorkers in,
maybe just skidding the ball under the bat. So yeah, he's been gold. It's gold dust when you go on a less than run a ball. Absolute gold dust. निखिल, जैसे नाइल ने भी बोला, उन्होंने ऑफ सीजन में काफी काम भी किया था अपनी आर्म स्पीड पर. बड़ा फर्क पड़ता है. आप जैसे हर काम में सब कोई अपना होमवर्क करके आते हैं. When you're playing a tournament of this magnitude, where some of the world's best cricketers would be playing and competing against you, it's important कि Arshdeep does his homework, and you can clearly see why he's being successful. कितनी मेहनत करके आ रहे हैं. Nile speaks about the release points because every team makes videos of the opposition bowlers as well. And as a bowling unit or as a batsman, you know your positives or your negatives, your strengths, your weaknesses, and you're always looking to improve on your weaknesses and also look to improve on your positives as well. So Arshdeep wo karke aaya, and that's why he's been so successful. The other thing is you can just chill back, but you're not going to get success because the opposition is going to find you out. So I'm happy that Arshdeep has put in the hard work, and that's why he's being so successful. And watching each and player out there. All right, अब आगे बढ़ेंगे और निखिल ने फैंटेसी टीम सिलेक्ट की है हमारे लिए. Let's have a look at that. Let's have a look at Fantasy Tracker powered by Sky247.net. तो ये निखिल की टीम है. KL Rahul, of course, left and right combination. Then Shikhar Dhawan. KL Rahul's got 200. Shikhar Dhawan consistently getting me runs. मुझे लगता है the worst is past for Mayank, and hopefully he'll get me some runs as well. And same with Quinton de Kock. Livingston, जिस तरीके से run बना रहे हैं और जिस strike rate से. And towards the end of the innings, I've got, of course, Deepak Hooda, holder run बनाते हैं. कृणाल पांड्या इसलिए क्योंकि वो bowling और bat से contribute करने को देखते हैं. रबाडा हमेशा एक अच्छे ऑप्शन रहते हैं विकेट्स के लिए. राहुल चहर और बिश्नोई, दो रिस्ट स्पिनर्स जो मुझे लगता है वो बीच में आके ना विकेट चटका इन द मिडिल फेज ऑफ द गेम. सो आई थिंक these guys should be able to get us some points, valuable points. निखिल, वैसे आपने दोनों को चुना है, चहर और बिश्नोई को भी. दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छा साबित होगा? I think Rahul Chahar, he has more variations and he gets the actual leg spin to turn a little more because of his action, the variation. As a wrist spinner, when you're able to turn your leg spin, then even if you don't have a too big a googly, a little bit, if it does something off the wicket, it'll help you. And he's got the flipper as well. With Ravi Bishnoi, the pace that he bowls, and he bowls only the googlies, and it's because of the kind of action that he has कि सर के पीछे से हाथ आता है, इसलिए वो ज्यादा लंबा लेग स्पिन नहीं करते. इसीलिए मैंने थोड़ा सा राहुल चहर का नाम लिया कि वो थोड़ा सा ज्यादा शायद सक्सेसफुल हो सकते हैं. ओके, रिस्ट स्पिनर्स की बात हो रही है और इनकी हम कुछ और बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट सोशल ट्रैकर में. लेट्स हैव अ लुक. बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो हम लेकर आते हैं सेगमेंट में. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ट्वीट. ब्रोमांस बिटवीन कुलदीप एंड चहल, द कुलचा बॉन्ड वी ऑल नो. कुलदीप ने देखिए क्या बोला है. विद ऑल माय हार्ट आई वांट चहल टू विन द पर्पल कैप. एंड मैं आज देख रही थी चहल ने भी उनके लिए एक बहुत प्यारा सा ट्वीट डाला था. I wanted to win the purple cap as well, because I think on our first show I was asked to do who's going to win the tournament, who's going to be leading wicket taker, and who's going to be leading run scorer, and I said Rajasthan, Butler, and Yuzvendra Chahal. So I wanted to win it as well. So I'm glad Kuldeep and I are on the same page. Good. Okay, let's have a look at the second tweet. Do you think, Nikhil, this is a step back for Mumbai? Kulkarni was part of the commentary team, official broadcaster. He has been roped in. अब धवल को ये काफी देर से वो चर्चा चल रही थी that they wanted to get धवल in to the ranks. देखिए हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है, अभी भी बहुत फिट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं. वो तो हैरान हूँ कि उनको किसी टीम ने नहीं लिया. But I hope he gets that opportunity because
आपस में हम लोग बात करते रहते हैं, you know, the word spreads around. He's probably bowling at his best. He's getting the ball to move as well. He's still got a lot of pace about him. तो अच्छा है अगर मुंबई में वो जुड़ते हैं टीम के साथ और एक भारतीय गेंदबाज होते हैं तो आपकी टीम को और मजबूती मिल सकती है. सो अगर ये सच है, और भी ऐसे सारे प्लेयर्स हैं जिनको वो मौका दे सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जिनको मौका मिला तक नहीं अभी तक. जरूर, बट शायद वो थोड़ा सा और ट्राइड एंड टेस्टेड गेंदबाज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप एक लोकल बॉय की तरफ जाने को देख रहे हैं. आप महाराष्ट्र में ये सारे मैचेस हो रहे हैं, वो यहीं पे बड़े हुए हैं, वो इन पिचेस की लाइन, इन पिचेस की लेंथ को समझते हैं कि कहाँ डालना है, किस तरीके से. एंड यू नो, वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने कमाया है, दैट इज इनवैल्यूएबल. तो मुझे लगता है कि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अनुभव के पीछे जाएं. सो आई होप इट्स ट्रू एंड ही जॉइंस द टीम एंड वी सी हिम इन एक्शन. ओके. चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, विच इज नाइल से मैं सबसे पहले पूछूंगी. नाइल, व्हाट डू यू थिंक, हु आर द टॉप 3 पिक्स if we talk about value for money this season? Well, listen, I picked 3 out. I went for Tilak Varma from Mumbai. I thought he struck the ball well. He's got over 250 runs. Strike rate's over 140. I like Tikshana from Chennai. Enjoy watching him bowl for Sri Lanka. He was cheap as chips, as they say in England. What a cheap boy he is, but a little bit like the new Agenta Mendes. Let's see how long it lasts for Tikshana. And Aidan Markram, I thought was a good purchase for Sunrisers. Had a little bit of time last year with Punjab, but a proven warrior campaigner for South Africa, and he hasn't let Hyderabad down this season. Struck the ball well, strike rate's good. He can anchor an inning. So they're my 3 kind of bargain buys, as it were. Okay, Nikhil, what about you? देखिए, मेरे लिए ब्रूविस ऑफ कोर्स, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तिलक वर्मा उभरते हुए सितारे हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और एंड आई लाइक हिज टेम्परामेंट, हाउ ही कंट्रोल्स द गेम. और फिर यादव, कुलदीप एंड उमेश, दोनों यादव जी मेरे लिए, क्योंकि दोनों में हुए थे. करेक्ट. और जिस तरीके की उनकी वो परफॉर्मेंस रही है, मैं तो बड़ा हैरान था कि उमेश जी को पहले बारी में वो नहीं पिक किया गया था. सो आई एम हैप्पी दैट ही इज डूइंग वेल एज वेल. तो वैल्यू फॉर मनी, जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अद्भुत. तो ये मेरे 4. आपने 3 बोले थे, मैंने 4 दे दिया आपको. ओके, चलिए हम थोड़ी सी स्काउटिंग सिस्टम की बात करते हैं. नाइल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्काउटिंग सिस्टम्स द फ्रेंचाइजीज have in place? Well, it's very complex, to be honest with you. It's these franchises, or most of these franchises, shall I say, they have got eyes and ears all over the world. So I guess when this tournament started, way back in 2008, it was probably you were relying on your scouts in India, but now just the scouts in every little different pocket of India trying to unearth that next little gem. Rajasthan do it brilliantly. They've got scouts all around the world. They're tapping into every different resource. Everyone that watches the game of cricket, these franchises are going to be working with or speaking to, whether it be an umpire, whether it be a scorer, whether it be a commentator. Like, who do you like? Who did you see in this recent tournament? The CPL, for example. It's all well and good watching a game on TV and seeing someone score 80 or 40 balls. It tells you some of the story, but it doesn't tell you what the person is like on a daily basis, what makes them tick, will he fit in our franchise environment? And then it comes down to what you're willing to pay a player. I know franchises that have been willing to go to X for a player and they won't go anymore. And there's been battles at the auction table between coach and owner. I want to spend another 50 grand or 100,000 USD. No, we said our price point, our stop point was 600K or 700K. And they lose the player for merely 20 or 30,000 US dollars. So it's a very, very technical, kind of scouting system that goes way beyond, looking through stats pages. There's a lot more complex. Some teams do a lot better. I think you're seeing teams this season who've done it really well. Something like Rajasthan, I think, have done it very well. Probably the teams that are struggling at the bottom, we're looking at Chennai and Mumbai. I reckon I've rested on the laurels there.
of previous year's success. They've rested on their laurels, and unfortunately, they haven't unearthed any gems. They haven't picked, they've picked a couple of crackers, obviously, with guys like Brevis, maybe Mumbai and Varma, but generally they've stuck it with type, and that's probably why they're down the bottom. So it's an interesting facet of the game, and it's something I love speaking to the analysts about, because they are people making big calls for big money. Definitely, auction decides a lot for a team. उनकी जीत और हार बहुत डिसाइड करता है. डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो निखिल, आपका क्या कहना है? किसके पर्सपेक्टिव से? सॉरी शिवाली. ऑन द स्काउटिंग सिस्टम ओनली. अगर हम ये बात करें कि डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से इसे देखें. देखिए, डोमेस्टिक में क्योंकि आपके बहुत सारे खिलाड़ी जो है हर टीम में वो डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बड़ा जरूरी रहता है. जिस टीम में आप खेल रहे हैं, आपको उदाहरण के तौर पे आपको देता हूँ, ऋतुराज गायकवाड़, आप वो मुकेश चौधरी को लेके आए, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं. कल कलकत्ता के लिए वो हर्षित राणा भी खेल रहे थे, बहुत से लोग जानते नहीं थे, नीतीश राणा ने उनका नाम अगर प्रपोज किया है, उनको वो लेके आए. सो अगर आप एक टीम से खेल रहे हैं, एक जगह से खेल रहे हैं, सो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वो एक चलता है. एंड हर टीम का स्काउट जो है ना, भारत में जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, जो बीसीसीआई की ट्रॉफी होती है, द 20 ओवर टूर्नामेंट, हर टीम का स्काउट वो टूर्नामेंट देखता है. उसके बाद एक और डोमेस्टिक लेवल पे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट होता है, जो यहीं पे मुंबई में होता है, नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो होता है. सारे उभरते हुए खिलाड़ी जो है वो उस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं. तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वो होता है. बहुत सारी टीमें जो है वो अंपायरों से बात करने को देखती हैं, कौन से खिलाड़ी ने किस समय क्या किया है. बट अंत में वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम द सेम टीम. एंड ऑफ कोर्स सैयद मुश्ताक अली जो भारत में बीसीसीआई ट्रॉफी कराती है, और विजय हजारे जो एक दिवसीय टूर्नामेंट रहता है, एवरी सिंगल स्काउट फ्रॉम द टीम गोज एंड सिट्स एंड वॉचेस. मजा आता है ना कि खाली स्टेडियम होता है और फिर आपको एकदम से 25 लोग एक खेमे में होते हैं, फिर वो इधर उधर बढ़ जाते हैं, अपनी अपनी डायरी में चुपचाप से नोट कर रहे होते हैं कौन किस खिलाड़ी के बारे में लिखने को देख रहा है. ये डेटा और ये जो एनालिसिस होते हैं, ये आजकल टीम्स इतना फोकस करती हैं इन पे निखिल. देखिए, डेटा और एनालिसिस तो आपको चाहिए रहता है, लेकिन डेटा आप कई बारी जो है ना, मेरा चयनकर्ता का जो अनुभव है, मैं थोड़ा अलग तरीके से प्लेयर को भापता हूँ. अगर आप मैदान में नहीं बैठे ना, तो कई बारी वो लीडिंग, वो द नंबर्स कैन मिसलीड यू. कि आप कहते हैं भाई इस लड़के ने 500 रन बनाया, बट किस जगह बनाया, किस तरीके से बनाया. सो आई एम समबडी हु लाइक्स टू वॉच इट वेरी वेरी केयरफुली. क्या बॉलिंग थी, किस समय चल रहा था गेम, क्या चल रहा था, सो कितने मुकाबलों में रन बनाए. बट इट्स इम्पोर्टेंट जिस तरीके से every scout goes and sits and watches only for that reason, because they want to see what's happening in the game and how is that player reacting. That's the important aspect. Okay, उसके बाद सॉरी शिफाली, होता क्या है, when they have say a rough idea of the players that they're looking for, what role they want them to come into the team, then they have a selection process. फिर वो 2-2.5 हफ्ते का कैंप लगाते हैं. They give them different sort of roles in their own side, and then they see whether they want to go ahead for that player in the auction or not. So अंत में वो कैंप में बुलाते हैं जिन खिलाड़ियों के साथ वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि इस खिलाड़ी का क्या किरदार देने को देखेंगे अपनी टीम में. And Nile, if I ask you, do you think this is on ground scouting, or on the other hand, if you see any team is going down the money ball route? Well, I know it might sound a little bit strange because Punjab have forked out huge sums on a couple of players, but they are certainly somebody. They've employed, you probably call him an analyst, but he's probably more than that. He's a fella from the UK, Daniel Weston, and he is a number cruncher. He is somebody from that kind of money ball philosophy. So some of their picks, there was definitely a little bit about Moneyball. Something like a Benny Howell, for example. You haven't seen him yet, but he's dominated in the UK for years, and he's played at different tournaments in Bangladesh and Pakistan and Australia, and his numbers are exceptional. He may not get a game in this tournament, but that was a kind of Moneyball signing. So Punjab are somebody certainly that have used that philosophy to get some of their players in the auction, but then again, they splurge huge sums on Liam Livingston because they know what he can do. So I think sometimes the coach wants
and the owner wants, and especially when you got franchise that have multiple owners, one owner wants this, but the other owner wants that, but one owner's majority shareholder, so it's a bit of a power struggle. But I know the analysts have a huge role to play, but I'm also one that, I can see a stat. Bloke averages X, strike rate X. But when does he strike it? What's a strike rate at certain periods? Can he hit me 3 sixes in the last 5 balls to win me a game? That's kind of the stuff. It's more precise. It's getting more precise. Years ago, he averaged 25 with a strike rate of 140. That means 165. He must be a good player. Not necessarily true now. Nikhil wanted to make a point. जी, ये जिस तरीके से आप ऑक्शन की टेबल पे बैठते हैं ना, बहुत जरूरी रहता है कि आपके जो नंबर आंकड़े आपको एनालिस्ट देता है वो निकाल के देता है कि जो चीजें घटना ऑलरेडी घट चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बताते नंबर की वो घटना जो ऑलरेडी घट चुकी है किस स्थिति में. लाइक नायल जस्ट सेड, हाउ डिड ही गेट द रन्स, व्हाट वाज दैट, दोस नंबर्स नेवर टेल यू द एक्चुअल स्टोरी. दैट स्टोरी इज इंपॉर्टेंट. एंड बॉटम लाइन इज every franchisee team owner wants to say, I want to spend $100,000 but I want a player who can give me value of $2 million. भैया कॉर्पोरेट जमाना है भाई, 50 लाख का प्लेयर खरीदूंगा, 5 करोड़ की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सीधी बात है. This is business. अच्छा, टॉस दे दर्शकों को. पंजाब has won the toss and they have opted to bowl. But अगर हम पिछले stats देखें, निखिल and Nail, if we look at the previous stats at this stadium particularly, the team who has opted to bat first has won. डिफेंड करने में आसान रहता है. So well I guess शाम के समय पे पुणे में देखिए एक तो ओस नहीं रहता, so the ball stays dry, there's no dew in the evening in Pune, so and in the evening it does a little bit. So अगर आप एक अच्छा स्कोरबोर्ड पे दर्ज करते हैं, so आपकी bowling you can go out there and defend. शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है. और जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि मनीष पांडे नहीं खेल रहे. मनीष पांडे नहीं खेल रहे हैं. हाँ, लखनऊ की टीम there's Quinton, KL Rahul, Marcus Stoinis might come and bat in number 3, Deepak Hooda, Ayush Badoni, Krunal Pandya, Jason Holder, Dushmanta Chamira, Mohsin Khan, Arish Khan, Ravi Bishnoi. So that's that team, and I think Punjab have gone unchanged from the previous game as well. So like we were speaking, Niall, I think because we're in the business end of the tournament, so it's unfortunate that Manish Pandey misses out because he couldn't get runs. Yes, I think we've lost Niall and also शिफाली पंजाब अनचेंज, ये एक अच्छा साइन है एक टीम के लिए कि देखिए मयंक कप्तान, I think the worst is past him, best is yet to come. Shikhar, Bhanuka Rajpakshe, Liam Livingston, Johnny Bairstow, Jitesh, Rishi Dhawan, Kagiso Rabada, Rahul Char, Arshdeep, Sandeep. ये पता चलता है कि ये टीम अब यहाँ से बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जितने मुकाबले बचे हैं ना, ये सेटल टीम लग रही है. अब उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फेरबदल होने वाला है बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इशू कुछ हो रहा है. So they'll continue with that. So this is a good sign for Punjab. Okay, Nail is back. Let's pick a team for today, Nail. What do you think, Punjab or Lucknow? I'm gonna go for Punjab. I'm sorry, my connection just kind of was a bit in and out. Apologies. I'll go for Punjab. I think they've got what they wanted out of the toss. They're a good, powerful side. They should be able to chase down any score really. So I'll go for Punjab. Although I do like Lucknow as a unit, but I'll go for Punjab today. And Bairstow, these guys just to finally live and see all these guys to fire at home. But it should be a cracking game actually on a good surface that should give the seam bowlers a little bit of assistance early. So I don't think Lucknow, they shouldn't be too disappointed because there is going to be a bit in it for the bowlers as well. Okay, Nikhil, according to you, favorite food क्या? फटाफट बताओ जल्दी. फेवरेट क्या? फेवरेट फूड आपका? फूड? हाँ, छोले भटूरे मजा आता है कि नहीं? नहीं, मैं अब हेल्थ कॉन्शियस मत हो. हेल्थ कॉन्शियस देखो जी, पंजाब बढ़िया छोले कुलचे खाएंगे, शाम को मजा आएगा. पंजाबी हम बग्गा, हम पंजाबी सपोर्टिंग पंजाब, ऐसे कर लेते हैं निखिल. अच्छा ठीक है. The idea is
you back the captain. कई बार ये होता है ना टीम देके back the captain that wins the toss कई बारी. Okay. Okay. क्रिक ट्रैकर पोल करता है हर बार की तरह. Let's have a look at the poll result. Is Arshdeep the best Indian bowler at the death after Bumrah? 71% said yes and 29 said no. Quick reaction on this. I'm with him because of the kind of numbers. Economy less than 6 at the death. These numbers are unheard of. So I'm with him. Yeah, I'll jump on. I'll jump on his back now. I think at the moment, but you know, Bumrah's been doing it a very long time at the highest level. So let's not get carried away. Yes. Okay. I think we are done for today. Thank you so much for joining, Nile. Thank you for joining, Neil. And I'll have a word with you after the match. See you on the other side. Thank you for watching Sky247.net presents Not Just Cricket. Thank you.